Hi guys, in this question, which one of the following about an electron occupying the 1s orbital in a hydrogen atom is incorrect? And the Bohr radius is represented by A or A0. We have four options here. The probability density of finding the electron is maximum at the nucleus. The electron can be found at a distance 2a0 from the nucleus, option B, and option C, the magnitude of the potential energy is double that of its kinetic energy on an average. And option D, the total energy of the electron is maximum when it is at a distance a0 from the nucleus. All the first we take statement first. This is about probability density, and the sign of probability density is psi square of finding the electron is maximum at the nucleus. Guys, probability density, or if we define an orbital, what is definition of orbital? Probability of electron finding electron around nucleus maximum, then it is known as orbital, and it is the part of quantum physics. There is no importance of psi square physical. There is no physical means of psi square. Okay guys, it has only mathematical approach, and let's see a graph or a diagram to explain option A. Let's see in the diagram, this is graph between psi square and the radius of atom. If radius increases, the value of electron probability density is decreases. You can see here is decreases. It means if we go towards nucleus, the electron probability density is maximum here. And you can easily see in this diagram, if this is nucleus at the center, and we take electrons as a electron cloud. The electron cloud is denser around nucleus, and as we go towards circumference, the density of electron clouds is decreased. It means we can say the probability density of finding the electron maximum at the nucleus, it is correct. And we have to find incorrect statement. Then check the second statement. The electron can be found at a distance 2a0 from the nucleus. Yes, it is also correct, because electron can be found at all distances around the nucleus. And the magnitude of the potential energy is double than that of its kinetic energy on an average. It is also correct, and we can check this by first assumptions of Bohr. Atomic model. The total energy of the electron is maximum when it is at a distance a0 from the nucleus. Let's check it. What is the formula of energy of electron? En is equal to minus Ze square upon R square. Okay guys, if I take here E1 is equal to minus Ze square upon A0, and if I take A2 here, minus Ze square upon 2A0, which is greater. Guys, E2 is greater. As we know that, it's very simple concept. This is lower energy level, and this is higher energy level, and this is more higher energy level.
If it is A0, then it is 2A0. It means this is incorrect statement. The total energy of electron is maximum when it is at a distance A0 from the nucleus. It is incorrect statement, and we have to find incorrect statement. That's why our answer is D. Answer D, guys. These are not related to answer. Thank you very much. क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो वर्क फंक्शन यानी कि डब्ल्यू नॉट की वैल्यू पूछी हुई है या फिर फाई की वैल्यू पूछी हुई है। वेवलेंथ गिवन है, तो वेवलेंथ हमारे पास लैम्डा गिवन है, जनरेट्स फोटो इलेक्ट्रॉन और उनकी वेलोसिटी दे रखी है। तो वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी लैम्डा और वर्क फंक्शन में रिलेशन है कि जो टोटल एनर्जी होती है इट इक्वल्स वर्क फंक्शन और प्लस में काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर वर्क फंक्शन निकालना है तो वर्क फंक्शन इक्वल्स टू टोटल एनर्जी माइनस में किनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास टोटल एनर्जी इज ई माइनस काइनेटिक एनर्जी। ई होता है एच न्यू विच इज एच सी बाय लैम्डा, माइनस में काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। अब मास किसका होगा यहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी में मास होगा इलेक्ट्रॉन्स का। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, सारी वैल्यूज तो पुट करते हैं। तो यहाँ से फाई की जो वैल्यू आएगी, वी हैव फाई इक्वल्स एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू गिवन है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू सी की वैल्यू होगी 3 इंटू 10 की पावर 8 होल डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू होगी 4000 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो जाएगा 4000 इंटू में 10 की पावर माइनस 10 मीटर। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरे फैक्टर में से मुझे माइनस करना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ मास है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। सो वेलोसिटी वी हैव एज 6 इंटू 10 की पावर 5 और इस पूरे फैक्टर का होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो वर्क फंक्शन की वैल्यू आती है इट इक्वल्स टू 3.35 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो भी हमारे पास आंसर है उन सब के केस में आंसर सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं। अब यहाँ पर कन्वर्जन के लिए भी दे रखा है कि जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है दैट इज 10 मच। सो कन्वर्ट करने के लिए जूल को जब हमें कन्वर्ट करना होता है इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस पूरे फैक्टर को हम डिवाइड कर देंगे बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनवर्स। और ये जूल है तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी दिस वैल्यू इक्वल्स टू 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज आइदर ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। Hello guys, in this question it is saying that the ground state energy of hydrogen atom is minus of 13.6 electron volt. The energy of the second excited state for helium plus ion in electron volt is, we have 4 options given. So let's find out its answer. So there is a simple formula to find out the energy of any state of any element. So the formula is we have is E is equals to minus of 13.6 into Z square by N square, where Z is the atomic number and N is the number of shell in which this is in which the electron is present. So we in this question, this is helium, so the atomic number is equals to 2 and this is in excited state. So for N, for this is equals to 3 because for N is equals to 1, this is our ground state. This is our ground state. For N is equals to 2, this is our first excited state. First excited state, right? For N is equals to 3, this is our second excited state. Second excited state. Right, so here we will use N is equals to 3 here. So let's start putting value in this formula. So E is equals to minus of 13.6 into Z square. This will be 2 square. This will be 4 divided by N square. Here N is equals to 3. This is divided by 9. So after solving this, we will get E is equals to minus of 6.04 electron volt. So our answer is energy is equals to minus of 6.04 electron volt. So the appropriate option is
option number D. This is answer. Thank you for watching. Best of luck and bye bye.